Hello and welcome to my channel. This is part 2 of the lakes of the world. We will be discussing about the lakes which are also found in various other continents, that is Asia, Europe, Africa, as well as in Australia. This video is going to be in English as well as in Hindi. So let's get started. Let's talk about the large lake of Baikal, which is in Russia. It is situated in a rift valley which is in Siberia between Irkutsk and Oblast. This lake is the world's oldest and the deepest lake. It was formed 25 million years ago, and it is also the deepest. The depth is 1,700 meters below the surface. It was formed in between the Eurasian and the Amurian plates. Now there was a fault which was created and the land got subsided. So this was a continental plate subsidence which resulted in the formation of the Rift Valley, which is actually Lake Baikal. The UNESCO World Heritage Organization calls Lake Baikal as Galapagos of Russia, which is named after an island. Because like Galapagos Island, this region also has huge biodiversity. तो हम बात कर रहे हैं लेक बायकाल की, जो कि रशिया साइबेरिया में सिचुएटेड है और ये इर्कुत्स्क और ओब्लास्ट के बीच में लोकेटेड है। लेक बायकाल विश्व का सबसे पुराना और गहरा लेक है। ये 25 मिलियन साल पहले फॉर्म हुआ था जब यूरेशियन प्लेट और अमूरियन प्लेट आपस में टकराई थी। इनके टकराने की वजह से दरार पड़ गया और इसी दरार की वजह से एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे आ गया, जिसकी वजह से रिफ्ट वैली फॉर्म हुआ। यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज ऑर्गेनाइजेशन ने इस लेक का नाम गैलापागोस ऑफ रशिया भी कहा है, क्योंकि यहाँ पे कई प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। हम बात करेंगे दुनिया के 15वां सबसे बड़े लेक की, जिसका नाम है लेक बल्कश, जो कि दक्षिण पूर्व कजाकिस्तान में स्थित है। ये मध्य एशिया में सिचुएटेड है। लेक बल्कश की एक खासियत है कि एक बहुत ही पतली सी स्ट्रेट इसको दो भागों में विभाजित करती है। स्ट्रेट एक नैरो पैसेज होता है पानी का, जो कि दो सी या दो बड़े वाटर मासेस को डिवाइड करती है और कनेक्ट भी करती है। इन दोनों भागों का संगठन अलग अलग प्रकार का है। जो पूर्व भाग है वो नमकीन है और जो पश्चिम दिशा में है उसका पानी मीठा है। लेक बल्कश गर्मियों में सूख जाता है, इसलिए इसका स्विमिंग पीरियड भी बहुत ही कम है। मिड जून से लेकर सितंबर तक आप इसमें स्विमिंग कर सकते हैं। Lake Balkhash is situated in the southeast part of Kazakhstan. It is the 15th largest lake in the world. It is basically located in the central part of Asia. Lake Balkhash is divided into two parts by a narrow strait, and these two parts have got different water compositions. On the western side, the water is fresh water, and on the eastern side, it is brackish or salty water. Lake Balkhash is a shallow lake. Its depth is 25 meters. In summers, it dries up and you can only swim in between mid-June and September. Now let's talk about the Caspian Sea. Caspian Sea is the largest inland water body and it's the world's largest lake. It is bordered by mainly 5 countries: Kazakhstan, Turkmenistan, Iran, Azerbaijan and Russia. The water of the Caspian Sea is mainly salty, but there is an inflow of fresh water in the northern parts by the rivers which flow into it. Caspian Sea is drained by these rivers: Volga, Ural, Kura and Terek. Caspian Sea is highly rich in a wide variety of species. Especially it is famous for its caviar and also oil resources. Several oil industries are located near it. Caviar is a very expensive delicacy which is mostly used in the restaurants for garnishing and also eaten raw. So it is extracted from the sturgeon fish which is found in Caspian and the Black Sea. There are several oil extraction, oil industries as well as refining
centers, and these oil fields they drain a lot and huge volumes of untreated sewage as well as industrial waste into the sea. This is causing a lot of pollution in the Caspian Sea and harming the ecology of the Caspian Sea. So it is predicted in the 21st century the depth of the sea will decrease drastically. All these destructive activities are causing desertification and global destruction of the Caspian Sea and also ecocide. So, ecocide is a mass destruction of the ecology because of the immature activities of the human beings towards the environment. कैस्पियन सागर विश्व का सबसे बड़ा झील है और ये सबसे बड़ा अंतर्देशीय जल निकाय भी है। इसकी सीमाओं में कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, अज़रबैजान और रशिया है। कैस्पियन सी यूरोप और एशिया के बीच में स्थित है। इसके पूर्व में कॉकेसस माउंटेन और पश्चिम में स्टेपीज सेंट्रल एशिया का पार्ट है। इसका सरफेस एरिया 3,71,000 किलोमीटर स्क्वायर है। बहुत सारी नदियों की प्रणाली कैस्पियन सी है, जैसे कि वोल्गा, कुरा और यूरल और टेरेक रिवर। कैस्पियन सी में प्रजातियों की विस्तृत श्रृंखला पाई जाती है। उनमें से कई ऐसी प्रजातियां हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा दुर्लभ है। यहाँ पे कैवियर बहुत ज़्यादा फेमस है। कैवियर रो और स्टर्जन मछलियों के अंडे से बनता है और ये एक स्वादिष्ट व्यंजन है। इस एरिया के आसपास कई ऑयल रिफाइनरी और इंडस्ट्रीज़ है जो कि बहुत ज़्यादा पोल्यूशन क्रिएट करते हैं, क्योंकि बहुत सारा जो ऑयल है और जो वेस्ट है, इंडस्ट्रियल वेस्ट है, वो इस लेक में जाके, इस झील में जाके मिलती है। बहुत सारे जो रिवर्स है जो यहाँ पे फ़्लो करते हैं वो भी अपने साथ बहुत ज़्यादा पोल्यूटेंट्स लेके आते हैं, जिसकी वजह से जो यहाँ पे जो स्पीशीज़ और फिशेस और मरीन ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सब डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। और ये प्रिडिक्शन है कि 21st सेंचुरी के आते आते ये पूरा कैस्पियन सी सूख जाएगा और डेजर्ट बन जाएगा। Lake Victoria is a huge lake which is a part of the Great African Lakes. The total surface area is 59,947 kilometers square. Earlier, the name of Lake Victoria was Luganda, and it was also known by different names in different regions of Africa. Later on, it was renamed under the Queen Victoria by explorer John Hanning Speke. Lake Victoria is through which the largest lake of the world, River Nile, originates from. It was formed around 400,000 years back. It's basically a rift valley. It was caused because of the upliftment of land on both its sides. So it was basically due to the upliftment of block mountains on both the sides. This region is a kind of a depression which is filled with water. लेक विक्टोरिया जो अफ्रीका में है और ये बहुत ही बड़ा झील है जो कि ग्रेट अफ्रीकन लेक इसको कहा जाता है, और इसका जो टोटल एरिया है वो 59,947 किलोमीटर स्क्वायर है। लेक विक्टोरिया को पहले अलग अलग नाम से जाना जाता था, उनके कई अलग अलग लोकल नाम थे। बाद में ब्रिटिश एरा में इसका नाम क्वीन विक्टोरिया के नाम से रखा गया, जो रखा था एक्सप्लोरर जॉन हैनिंग स्पेक ने। तो यहाँ पे कई प्रकार की मछलियाँ पाई जाती हैं, इसमें से बहुत कॉमन है सिक्लिड। लेक टैंगनिका इज़ ऑल्सो अमंगस्ट द ग्रेट अफ्रीकन लेक्स। इट इज़ द ओल्डेस्ट freshwater lake of the world and the second deepest lake of the world. It is the world's longest lake also. The stretch or the length is 676 kilometers and its total depth is 1,470 miles. So Lake Tanganyika is surrounded by Burundi, Tanzania and Zambia. It is in the Republic of Congo. The lake is surrounded by mountains on all its sides, and it was basically originated in the Albertine Rift. So it was caused because of the formation of a rift valley in a mountainous region. Lake Malawi, जो कि तंजानिया में लोकेटेड है, इसको हम लेक न्यासा भी कहते हैं तंजानिया में, और ये सराउंडेड है मलावी, मोज़ाम्बिक और तंजानिया से। ये दुनिया का तीसरे नंबर का सबसे डीप
फ्रेश वाटर लेक है जिसका पानी मीठा है और इसका जो बेसिन है, जो आसपास का जो रीजन है वो काफ़ी डेंसली पॉपुलेटेड है। बहुत सारे लोग यहाँ रहते हैं और काफ़ी वाटर बॉर्न डिजीज़ यहाँ पे पाए जाते हैं। कई प्रकार के फ़िश स्पीशीज़ अराउंड 800 से लेके 1000 फ़िश स्पीशीज़ यहाँ पे पाया जाता है और ये फ्रेश वाटर लेक है। यहाँ पे नाइल क्रोकोडाइल्स, हिप्पोपोटामस, मंकीज़ और फ़िश ईगल्स पाए जाते हैं जो कि फ़िशेस को पकड़ते हैं इस लेक से और वो फीड करते हैं। Lake Malawi in Tanzania, it is also known as Lake Nyasa, and it is located between Malawi, Mozambique and Tanzania. It is the world's third deepest freshwater lake. Its basin is highly densely populated and there is also high prevalence of waterborne disease. Around 800 to 1000 fish species are found here, along with other species of animals like the Nile crocodile, hippopotamus, monkeys, as well as fish eagles, which feed on the fishes of the lake. Lake Eyre is the largest lake of Australia. This lake is also known as Katitanda Lake and it is around 2.348 million acres large. It's a saltwater lake which is mostly dry throughout the year. It is only filled with water in the wet and monsoon season. So thanks a lot for watching my video. If you have liked the video, please press the like button and also subscribe to my channel. In my next video, I'm going to talk about the lakes of India.